I heartfelt welcome to our respected Dr. R.D. Gupta sir. He's going to deliver soft skill for an entrepreneur for this session. And I just give the brief introduction about our respected keynote speaker, Dr. R.D. Gupta sir. He is a renowned academician and professor, Department of Civil Engineering, Motilal Nehru National Institute of Technology, Prayagraj, India. And he has completed his B Civil Engineering from IIT Roorkee and post graduation ME Remote Sensing and Photogrammetric Engineering IIT Roorkee. Apart from that, he has completed Philosophy of Doctorate in Geoinformatics from IIT Roorkee also. And his area of research expertise is geoinformatics, core and application, web GIS, spatial data infrastructure, climate change, urban planning, open source software, land use and land cover mapping and monitoring, GPS for surveying and mapping, and he is professional of various professional body as a member, life member of Indian Society of Remote Sensing, life member of Indian Society of Technical Education, life member of Indian National Cartographic Association, life member of the Institution of Surveyor, member of GIS Development, member of ASPRS, American Society for Photogrammetric Remote Sensing, USA, and he has a lot of experience in the field of remote sensing as well as useful for the entrepreneurship development. Nowadays, the role of GIS and remote sensing is very much useful in the view of MSME 4.0. In the MSME 4.0, QR code and GIS based data is more important for the development of entrepreneurship. In this regard, the lecture related to the topic सॉफ्ट स्किल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हमें कैसा क्या बात करना चाहिए, इसको बताने के लिए हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर आर डी गुप्ता सर उपलब्ध हैं. मैं उनका विश्वविद्यालय परिवार के कुलपति कुल सचिव हॉल में, सेमिनार हॉल में, क्लासरूम में बैठे इस प्लेटफॉर्म में उपलब्ध फेसबुक, यूट्यूब सभी चैनलों में सभी की ओर से, जनजाति परिवार की ओर से, मां नर्मदा मैया की ओर से, अमरकंटक की धरती की ओर से सर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और अभिनंदन करता हूं सर. आपको सादर प्रणाम है सर, और आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके सर आभारी हैं कि आपने इतना मतलब हमारे एक सादर आग्रह पर हमारा विनम्रता पूर्वक आग्रह को स्वीकार किया और आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय दिए हैं सर. इसके लिए हम आपका आभारी हैं, और मैं इन्हीं वचनों के साथ आदरणीय डॉक्टर आर डी गुप्ता सर को ये मंच समर्पित करता हूं कि आप हमें अपना आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्रदान करें. आदरणीय डॉक्टर आर डी गुप्ता सर. A very good noon to all of you, and namaskar. I am really thankful, Professor Vikas K. Singh ji, for such a nice introduction. Really, thanks a lot. I, in fact, do not deserve such a such good words. Are really pleasure to me, and it's an honor to me. In fact, I would like to know one thing before we proceed ahead, that I do not have much idea about. I hope my voice is clear to all. Yes, sir. Very clear, sir. Voice is very clear, sir. Okay. I would like to know, because my topic is slightly, I was listening half an hour to VC sir, Dr. Patel sir. It was really enlightening lecture he has given. And my medium of slides is in English, and I hope there will be no issue in that, because No issues, sir. this. No issues. And I will try to be somewhat mixing up my thing, because I am accustomed in English, so I will try to be mixing it up with English and Hindi. So I hope that will work. Right. First of all, it's really, I would like to congratulate Professor Vikas K. Singh because of organizing such a nice program, which is really beneficial to the society and in particular to the government and to the nation. I was going through your brochure, and then I searched for your project through your website, and I found that
You are doing a wonderful work, and I will really appreciate you and give full marks to you. And my only thing is that you are doing a wonderful job to the society. Please keep it up. Right. Now, with this, I will share my screen and I will go for this. I hope the slides are visible. Visible. Just Visible. Yes, sir. Full screen also, sir. Clear. oh, okay. Thank you very much. In fact, this is to the participants that my lecture is not on core entrepreneurship, but or a specific field in the entrepreneurship, but rather regarding focusing on the soft skills which are really required to be successful as a startup, as an entrepreneur, or in life also. So let's see what are those things which you require to be successful as an entrepreneur. So major emphasis जो मेरा रहेगा इस टॉक का to discuss the usefulness, मतलब how the soft skills are useful for you all. But once you are either you are already doing some small business in the form of a startup or entrepreneur, or maybe you are going to start it, then what are the skills you require for that? So that will be my emphasis for next 1 hour, and I hope anywhere I will request the participants, anywhere any participants feel in between the discussions, because do not wait for the end. If you feel anything to be elaborated more, or if you are feeling that you want to discuss at that particular point, so I will advise all the students, all the participants, that they may just say hello and they can ask the question. So let's make it more interactive, because this is regarding soft skills, regarding you. So the more interactive it is, the better it will be. Now the first question is, have you got the relevant and requisite skills? When we say this, whether you have the relevant or requisite skills, then we have to see that also कि how many types of skills are there. तो हम skills को दो तरह में classify करते हैं. One is hard skills and one is soft skills. Let us see what are the hard skills and let us discuss what are the soft skills. In fact, if we talk about this hard skills, then you see hard skills basically are the technical knowledge you have acquired, or domain specific knowledge you have acquired. Like I am a civil engineer, so I have a domain specific knowledge. My specialization goes to geoinformatics. Then I am expert in GIS, remote sensing, GPS. So that is the technical skill or domain skill. That's what we said, that this is what जो हमने acquire की है college या institute में through learning, through 4 years, 2 years MTech, and then you have been, some of you must be engineers, some of you must be a graduate, some must maybe in still doing some of your you can say college or university. So you are acquiring certain skills through learning, repeated learning. Lectures will be there, you are learning that. So that is basically hard skills. So we have the hard skills here. So what is the characteristics of these hard skills? If we see, they can be measured. Like if I talk about programming, if I talk about mathematics, let's say you have a you can say having a skill in typing, you have a skill in, let's say, nursing, you have a skill in, say, plumbing, you have a skill in welding or any other skill. Then what is your typing speed? How much well you can weld? This we can measure it very well. We have well-defined things in which we can measure this. So every profession has its own hard skills. If we are talk about a civil engineer, he has a hard skill. If we talk about a you can say agriculture engineer, he has got its own hard skills. So they are different from each other.
So they have own requirements. But then what are the soft skills? One thing which is very much clear that these are not obtained through technical education, like you are obtaining the hard skills, but you are obtaining it through your personal growth or interactions with friends, interactions with the society. You are obtaining this. And it's not easy to measure them. You cannot have a measurable thing that you can measure these skills. आप इन skills को बहुत ज़्यादा तरीके से quantitatively measure नहीं कर सकते. It's you who will be, this will be reflected in your behavior, this will be reflected in your personality. And so let's see how the, still further in the soft skills, how soft skills and hard skills differs. That will give you a total insight about the things what we talk about hard skills, what we talk about soft skills. Now first, if we say it in the first point, I will say hard skills are technical skills or domain skills, जो मैंने अभी बताया. While soft skills are non-domain skills, we put it as non-domain skills. You can, second one, if you say, you can find the hard skill on your resume. That is, you prepare a good resume when you go to a company, or when you are applying for even say for some government of India scheme, then you will prepare a good project, you will put your qualifications, you will put your skills. That is, you are putting it on a resume, putting it on a project, and that's what is hard skills. That impresses the others. That is always better. But then what is soft skill? If I say, it is when you are going to a company, it is when you are presenting your project to some panel, then how you are presenting that is your soft skill. So we can say hard skills are measurable, tangible, but they are intangible. Now I give one this example. If you see this, if we talk about, just I am putting the, you can say, just a minute, I will pointer option. So if you see this, hard skills are about what you speak. And you know, if I speak the same sentence, I have different ways to speak. So the best example given for hard and soft skills is that hard skill is about what you are speaking, and soft skill is how you speak to others. आपने देखा होगा कि कुछ लोगों से आप 5 मिनट, दो फ्यू मिनट्स आप बात करेंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छा, कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा आदमी है. You get impressed. That's the way he is speaking. And another person is speaking the same thing, but you will say, oh, somewhat not so good or irritating, or you will see it. So that's what is the basic, or you can say the main thing we always say in any lecture, we give it on the soft skills about this. So हार्ड स्किल्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्क प्लेस. आप जिस जगह आप इंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रहे हैं, आप जैसे अभी डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के, आप डिफरेंट अदर एमएसएमई में काम कर रहे हैं, देन you are contributing to this. But you have a lot of employees, you have, you can say, various colleagues. Then how polite you are, what is your way of speaking, what is pleasing way of communicating with others, that is what we say soft skills. So this is what to emphasize on that. If we go further and see some more hard skills and soft skills, one or two more differences, then I can very well say the second one. Hard skills are job related skills. And I put this word interpersonal. Soft skills are interpersonal skills. And we have seen it. I'm telling it here also that nowadays there is a lot of emphasis in all the institutes about the soft skills. But if we talk about, I am serving in NIT Lava since 1993. And I seen at that time, soft skills or speaking, communication, anything was
highly neglected. But since 2000, we are giving lot of emphasis, and not we, all institutes are giving lot of emphasis for this, because success depends upon this. I'm not saying totally on this soft skill. A majority, you can say, if it is a success, you have, let's say, the equal, let's say two persons are competing each others, or two entrepreneurs are competing each others, and they have the, let's say, they are competing in the same field, they have a same set of hard skills. Let's presume a hypothetical situation. The one who has a good soft skills will be a successful person. So the development of soft skills, which we'll see after one or two more slides, you have to develop the soft skills, and we will see what are the various possible ways जिससे आप soft skill develop कर सकते हैं. What are the soft skills which you really require? So you are presenting your hard skills in workspace. These two examples are another way of representing hard and soft skills, because first we must understand very clearly in our mind what is soft skill. Like if hard skills are infrastructure, I am no way saying hard skills are not required. That is the primary requirement. But even more is now the soft skills which are preferred by industries. So we give the best one another example. It is any building you have seen. So if you talk about a foundation, how the foundation is made of cement bricks. So your hard skills are foundations, but all the bricks are joined together by cement. That is your soft skill. The infrastructure on which you are building the higher buildings, that is basically your soft skills. So that's the hard skill and soft skills. So you must have a judicious blend of hard and soft skills. What we can say, आपको एक बहुत ही अच्छी तरह से सोचा समझा हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का कॉम्बिनेशन चाहिए. किस लिए चाहिए ये कॉम्बिनेशन? टू बिकम ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल, टू बिकम effective entrepreneur or startup, or to even to succeed in personal and social life. You require all these things. So let's see further how the thing goes. So if I summarize all these things, then I will say that the importance of soft skills is to handle interpersonal relations. The first one, you have to handle the interpersonal relations, which is nowadays a must in any entrepreneurship or any MSME or any startups, to take appropriate decisions. Decision making is also a soft skill. It's not a hard skill. It is not taught. You can say you cannot learn and measure it. Decision has to be based on your various ground realities, and a decision in a particular situation differ करेगा दूसरे decision से. So in that case, it helps to take you appropriate decision. You are able to communicate effectively. आप बहुत ही effectively communicate करते हैं other person से. And I have just given the example. आप टू स्टूडेंट, दो कुलीग से या पर्सन से बात किया आपने, एक को बहुत अच्छा इंप्रेस हुए, आप एक से नहीं हुए. दैट्स व्हाट वी से, टू हैव गुड इंप्रेशन एंड इम्पैक्ट टू गेन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट. और अगर आप बहुत अच्छा बात करेंगे, then you will see that is what it will develop a good relation. Now I will just give an example here, that I just listened to Professor Vikas K. Singh, your PI of this project. The way he has spoken the few words regarding Professor Dr. JP Patel, Vice Chancellor, and I just listened the introduction to me. It's wonderful. I will give full marks. That's what is the first impression in the first thing, and that is what is soft skill. So a person, your PI who is organizing this course is also a expert in the communication. So that's a soft skill you have to develop it, which impresses the others in the first go within few minutes.
and that's what you have to develop it, and that's why you will progress and you will be successful in your life, in your business, in your entrepreneur. So let's see some more things about this, and then we will go one by one. So I will say soft skill is a synonym for the people skills. जो आपकी पर्सनल स्किल है, पीपल स्किल्स है, we say that is synonym to this. They are your personality traits that shape you how you work as an entrepreneur. Soft skills, I will say, are unsung heroes. We all give the credit to the hard skill, we all give credit to the technical things you have put in, but no, soft skills are the unsung heroes, they are the real heroes. So let's discuss some important soft skills one by one. जैसे यहाँ पर देखिए soft skills है, I have given you something like communication. Communication is one of the soft skills. Your self confidence is one of the soft skills. Team spirit or team working is one of the soft skills. Assertiveness is another soft skill. Empathy, your integrity or trustworthiness. So that's inquisitiveness or creativity. How creative you are. That's if you are more creative, you will get more ideas. So we will see, and these things you do it unknowingly. Even if you are not getting a proper, you can say, discussions on this, still I will say you are doing all things. But the question is, अगर आप इसको अच्छी तरह से हर पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज इम्प्रूवमेंट इज व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग. जब आपने सीखा कि ये मेरी कम्युनिकेशन इज अ सॉफ्ट स्किल, मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे इतना मीठा बोलना है, मुझे बहुत ही लिमिटेड शब्द बोलने हैं जिससे कि सामने वाला इंप्रेस हो. सो आपको आपको उसी तरह से आप धीरे धीरे, अगर आप में नहीं भी है कोई सॉफ्ट स्किल, देन यू विल बी एबल टू डेवलप दैट. आप उसको इंप्रूव करते चले जाएंगे. इटरेटिव प्रोसेस. सो डोंट थिंक इफ यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग, so don't worry about this, you will develop it, but know about that. And there are various courses, you can say paid courses, which are run by so many institutes for these soft skills. So let's see one by one some of the soft skills here. फर्स्ट एंड द फॉरमेस्ट जो मैं सॉफ्ट स्किल्स को रखता हूं, वो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को रखता हूं. दैट्स व्हाट यू रिक्वायर. इट इज द मोस्ट सॉट आफ्टर स्किल. सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है, वो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की है. स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन अगर आपके पास स्किल होगी, तो आप क्या कर सकते हैं? आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं. फ्रॉम इनिशियल बिल्डिंग रैपोर्ट थ्रू ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. लाइक इनिशियली आपको ने थोड़ा सा रैपोर्ट डेवलप किया, फिर आपने उसी रैपोर्ट को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में डेवलप किया. बट अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, आई एम यूजिंग द दोनों वर्ड्स, प्रॉपर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, then after some time you will lose the link. But if it is continuous and it's good, with certainly I will come to integrity and other aspects later. We require that. If you are honest to yourself, आपकी integrity has, and then you will develop a long term relationship. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप माइंडेड आप ध्यान रखिएगा कभी भी कि मेरे को इसमें बिजनेस की जरूरत है, मैंने बहुत मीठा बोला, बहुत अच्छा बोला, well, I have a good communication, you can misuse that, but no, then that will not develop long term relationship. So be careful that you are honest to the person to whom you are communicating, and your eyes, your face expression, your gestures all reflect this. So if you are positive, if you are honest, if you are having integrity, all this will reflect in your communication with whom you are doing it. But this, listen well, I am saying you are communicating, I am talking about communication skill, but I have second one I have written, you listen well. Well, I will come to this part in my next slide. Because कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब आप
अच्छे लिसनर हैं, when you are a good listener, then and only then you can be a very good you will have a very good communication skills. We will see that. And you have to vary the communications depending upon the circumstances. So these are the, and now what is this? This is not a technical one. That's what I emphasize in the beginning. That's not a technical skill. That's what you require development through personal efforts, personal traits. That's what I said. First, you need to listen. How you have to learn how to listen. Could you believe it? मैं एक simple how to be a good listener. I was just keep on searching the websites. मैं देखता रहता हूँ and we keep on searching the material. Even paid courses are there for even for this small aspect that how to become a good listener. And they have pointed out various small points. Like क्या होता है? आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं. मैं अभी इसी का एग्जांपल देता हूँ. आपने जैसे ही सुना उसके विद इन फ्यू मिनट्स आपने एक माइंड बना लिया, अरे यार मैं तो यहाँ पर केवल स्टार्टअप शुरू करना था, मुझे तो कोई छोटा सा एंटरप्रेन्योर बनना था, मुझे तो केवल एग्रीकल्चर फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था. एंड कहां से ये लेक्चर आ गया? यू हैव प्रिजुडिस्ड योरसेल्फ इन योर माइंड. आपने प्रिजुडिस कर लिया मतलब किसी भी लेक्चर, नॉट मी, एनीवन, जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, आपने इसको प्रिजुडिस कर दिया. यू डू नॉट नो कि जो चीज उसमें ही टोल्ड द वेरियस स्टोरीज, देन जिसमें उसने कहा कि जब मैंने पहली बार लिसन किया, आई वाज वेरी मच नॉन रिसेप्टिव, मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाह रहा था. But then after 2 years, he gave his own example. He said, I require that thing lecture, and then I took out the recorded lecture, and then I went there to meet him again to give me the details, and then that was useful. So don't be prejudiced what you listen, not even in this course, but anywhere in life. Even when you are approaching anyone, listen him very coolly without any prejudice. और माइंड में आप बिल्कुल ये नहीं उसका आंसर मत बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने आंसर भी बनाना शुरू कर दिया तो देन कि उसके खत्म होने से पहले आप उसको रिप्लाई करना शुरू कर देंगे. नो, लेट हिम आस्क व्हाट ही रिक्वायर्स, देन योर कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव. पहले सुनिए, समझिए बिना किसी प्रेजुडिस के, उसके बाद क्या वो चाह रहा है, आप क्या हैं, आपके ऊपर क्या बीती, डोंट टेल दैट. what you can give to the best of a solution, and that helps communication. This listening and communication helps you in your negotiation capabilities. आप किस तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं, कितना, और एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप इज नेगोशिएशन ऑल्सो. आप कितना अपनी पोजीशन से कंप्रोमाइज करेंगे, कितना दूसरे से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, कितना दूसरे को आप कुछ चीज देंगे, तभी जब एक दोनों के बेनिफिशियल सिचुएशन आएगी, देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड एंड बी सक्सेसफुल. सो बी ए गुड लिसनर. फर्स्ट थिंग, a great leader again must know how to speak, how to write, and how to present in front of an audience. Like I'm speaking, that's one trait. I am writing. Writing means my writing here is what? PowerPoint. So you will immediately judge after 3-4 PowerPoints. Oh, बहुत अच्छी PowerPoint है, बहुत खराब PowerPoint है. अगर अच्छा PowerPoint होगा और उसमें कुछ आपको मैटर लगेगा कि यार, and even if there is no substance, you will see, oh, very good, yeah, let's see how these PowerPoints are made. So that's what is writing a project report, writing your own you can say material for presenting before the committee, or writing about your plans and policies. That is what we say, right. And presenting, you have to present, certainly that's his communication again. So I will say, open up,
communicate with as many people as possible on daily basis. And one more thing, like some may hesitate in speaking in English. So don't be hesitant about that. Speak. जैसा भी आप बोलते हैं बोलिए. Here I will give my example here. I will give. मैं एक गांव में पढ़ा लिखा था. मैं राइसी गांव हुआ करता था अभी हर रोड की डिस्ट्रिक्ट के बराबर. मेरे फादर वहाँ टीचर थे. मैं 9वीं तक वहीं पढ़ा. पूरा गांव का माहौल देखा. मैं हिंदी में ही पढ़ा सारी चीजें. 10th से मैं रुड़की में आ गया एंड देन आई जॉइंड द स्कूल. वहां पर ऑलमोस्ट सारा मीडियम इंग्लिश का था. वेल मेरे पिताजी चूंकि टीचर थे तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प करी. आई लर्न इंग्लिश एंड फिर मैं आईटी रुड़की चला गया. ऑल मीडियम इज इंग्लिश. आई मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी. आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन हिंदी यूपी बोर्ड में. बट उसके बाद मैं रुड़की चला आया. आईआईटी में हो गया. फिर एमटेक हुआ एंड देन जॉब ऑल इंग्लिश. Now, from 2005, although government of India is emphasizing usage of Hindi, but from 2015-16, there is a lot of emphasis in technical institutions also. And when I was head of the department in 2017 to now 2019 in our institute, then I faced a peculiar situation. I forgot all the Hindi words, and now we are asked to use the Hindi words. We were asked to write in Hindi letter. So what we have to do it? For a few months, really it was difficult. Communicating all the things in Hindi is not good. But then we devised ways. We again recollected. And I myself organized a workshop for Hindi for my staff and the institutes. And then we all moved together. And would you believe it, from total English in which the civil department contribution of letters was from 20 to 25%, we took it to the 95%. But you require dedication, you require training, you require all these things. And communication is important. So अगर आप हिंदी में प्रोफिशिएंट हैं, आप कभी भी इंग्लिश में आ सकते हैं. अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं, आप कभी भी हिंदी लर्न कर सकते हैं. नो बार एट ऑल. सो डोंट बी हेजिटेंट. कभी आप अगर लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को डील कर रहा हूँ. आई नो व्हाट दे से. सर हमसे तो इंग्लिश नहीं बोला जाता. अभी भी हम थर्ड ईयर में मैं पढ़ा रहा हूँ. तो व्हाट दे से, सर किस तरह से कोप करें. देन वी टेल देम द वेज हाउ टू इम्प्रूव इट. सो फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज से, पहले अपनी शर्म निकाल दीजिए. आप कहिए मुझे इंग्लिश नहीं आती, तभी आप सीख पाएंगे. दैट्स व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, किसी चीज से अफ्रेड है, तो उसको एक्सेप्ट करिए पहले. दिस इज माई वीकनेस. अनटिल अनलेस आप वीकनेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, कोई दूसरी इंटरपर्सनल स्किल हो, आप उसको नहीं लर्न कर पाएंगे. सो फ्यू थिंग, बी ए गुड लिसनर, accept your weakness and work upon that to improve it, and that will help you to be an effective communicator. But this what I always say, जो मैंने लिखा, don't try to be over intellectual. अपनी टॉक में कभी भी या अपने उसमें बहुत डाउन टू अर्थ रहिए. बेसिक चीज समझाइए. अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे, ओके, देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु यूज सो वर्ड्स जो कि आप समझ ही नहीं पाएंगे. आम आदमी नहीं समझ पाएगा. उसके लिए हो सकता है उसको गूगल सर्च करना पड़े या डिक्शनरी लेनी पड़े. डोंट यूज दोस थिंग्स. बी योरसेल्फ. जो आप हैं बिल्कुल वैसा ही रहिए. पीपल लाइक सच पर्सन्स जो ऑनेस्ट है अपने लिए, जो खुद अपना एक्सप्रेस करते हैं अपनी लैंग्वेज में. डोंट बोरो द लैंग्वेज. दैट्स व्हाट आई विल से. So that's one thing. Now the question arises, body language. Body language is important even in the communication, and it's a sub skill of communication. So let's see what is this body language. That's what is again non-verbal. आप बोल नहीं रहे हैं, बॉडी से बोल नहीं रहे हैं, बट अगर आप देख रहे हैं किसी को और उसका स्माइलिंग फेस आप देख रहे हैं और उसके चेहरे पे मोटिवेशन, energy if you are seeing, then all this will reflect by the face, by his body language. How is he standing? Even these postures, I will not go into the details of these postures. Maybe kabhi aage kuch hua to I will be detailed out in other
courses to be organized, but this is 1 hour domain, so I will not go into that. Even your posture, whether you are standing like this, whether you are standing your hands in the pockets, whether you are standing like folded hands, all these matters. So be careful about your good posture. And again, here I will say, be modest. अगर आप modest हैं, आपका posture खुद ब खुद modesty show करेगा. अगर आप honest हैं, आपका posture, आपका body language खुद honesty express करेगा. The moment आपने उसको borrow करना शुरू किया, कुछ नहीं आएगा. आप एक धीरे धीरे आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ. सो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, स्टार्ट थिंकिंग. मैंने जैसे बताया, हम फिर वापस हिंदी में कैसे आए. मैंने अपने माइंड में इंग्लिश से हिंदी सोचना शुरू कर दिया. दैट्स व्हाट आई डिड. मेरे भैया जो खुद आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं, उन्होंने मुझको, जब मैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांजिशन में था, देन ही सेड मी, थिंक राजन इज माय आरडी गुप्ता, राजन देव गुप्ता इज नेम. तो भैया राजन, थिंक ओनली इन टर्म्स ऑफ, बिफोर यू स्पीक स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे. अगर आप हिंदी में सोचेंगे, हिंदी में बोलेंगे. तो मैंने पहले हिंदी से इंग्लिश में सोच के बोला, एंड देन फिर मैं इंग्लिश से हिंदी में सोच के फिर हिंदी में मैं बोलना शुरू किया. So I can speak some Hindi also. I do not know. मैं विकास जी जितना तो नहीं बोल सकता हूँ इतनी अच्छा हिंदी, लेकिन still I was fascinated आपको सुन के. But I can speak some Hindi also, and I am feeling proud that at least I am back with some Hindi words. So listen, think, then have a non-verbal means, have a good body posture, and then speak. That's what I will summarize this slide. And success in life depends upon communicating your ideas effectively. आपका स्टार्टअप क्या है? एक आइडिया को प्रेजेंट करना है, और अगर वो पसंद आ गया, आपको फंडिंग मिल जाएगी, आप उसको शुरू कर देंगे. You will get lot of support. So communicate your idea through good communication skills and you will be successful. Another aspect is your, I hope Professor Vikas ji, मेरा 11:30 पे शुरू हुआ, तो I hope I can take up to 12:30, 1 hour. Professor Vikas ji, are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because it's 1 hour, so I hope 11:30 to 12:30 will work. Na? It will not disturb your schedule, na? No. Yes, sir. Please continue. Okay, thank you very much. Thank you. टाइम मैनेजमेंट. जैसे ही टाइम मैनेजमेंट आया, मुझे भी ध्यान आया कि 11 से 12 था, मुझको 12 बजे नहीं, 12:30 पे मैं 1 आवर है, तो मैंने एकदम से परमिशन ले लिया. सो टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द very important aspect. How you manage your time. You have lot of works. जो फिगर में आप देख रहे हैं, you can say some games, you have some grocery, you have some clothes, you have some leisure moments. आपका कंप्यूटर पे काम भी करना है, बुक भी पढ़ना है, एंड ये क्लॉक टिक कर रहा है. सो हाउ यू मैनेज दिस टाइम. आपको ऑफिस के लिए भी टाइम चाहिए, आपको फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए, एंड दैट्स वेयर दिस इज इंटरपर्सनल स्किल. दैट्स वेयर योर स्किल्स कम इनटू पिक्चर, एंड दैट्स व्हाट यू डू. प्रायोरिटी को फिक्स करिए. टाइम मैनेज को करने का सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने ये बनाया हुआ है, प्रायोरिटी. You fix the priorities. Nothing else can help your time management except priority. So, and make sure, even today, I just take a A4 size paper or take a, you can say small pad. मेरे पास हमेशा यहाँ पर भी, घर पर भी रखा रहता है. आपका क्या होता है कि जैसे ही आपके माइंड में आइडिया आया, वो कुछ समय तक रहता है. या तो अगर वो डिस्टर्बिंग आइडिया आपको परेशान करेगा, अगर वो गुड आइडिया है तो थोड़े दिन में भूल जाएंगे, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. सो whenever you get an idea, always keep a small piece of paper in your pocket and a pen. Note it down immediately, and now your mind is free. You have put that idea into the paper. Your mind is free, and now you can, it is free for new thinking, because you do not have a fear, अरे यार मेरे दिमाग से ये निकल ना जाएगा.
So always manage your time by setting out the priorities. One thing, any idea which comes, you note it down on a A4 size paper or on a small pad. Keep that always with you, and keep on every morning when you go, see what are the works on priority I have to do today. And if you are able to manage this, you will be able to manage the time. And this is what is always said. Spend your time as your hard earned money. I am saying your hard earned money, जो आपकी खून पसीने की कमाई हम इसको कहते हैं. As a student, जब तक आप बीटेक कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, जब तक आपको अपने फादर से या मदर से पैसा मिल रहा है, तब तक आपको उसकी वैल्यू उतनी नहीं पता लगती. I also spent a lot of money during my BTech days without any bothering about how that is earned. But when I earn now, I know how much valuable it is. So you spend your time also just like your hard-earned monies. Then we say 3 P's. Time management के लिए हम 3 P's कहते हैं. What is 3 P's? Plan, prioritization, performance. Plan. Every minute you spend in planning, save 10 minutes in execution. That's what I said. जो भी आपका आइडिया है उसको रखते जाइए. उसके हिसाब से every morning make a plan that these are the works I have to do. Keep them in pocket and keep looking during your days, and then keep on doing all those works. And that's what it will give you 100% or even 1000%, they say, return on your energy, because you are working with some energy. You want full return on that or even better return on that. So plan your work properly for better time management, right? Second thing is prioritization. So you have to prioritize. I just said priority. You have to prioritize your available resources. Time is also a resource. Or if you have physical resources, then plan them well. And performance. Third is performance. We say execution is the game. Whatever is best plan, whatever you have prioritized. अगर आप केवल सोचते ही रहेंगे, दिन में सपने देखेंगे, तो आप execute नहीं कर पाएंगे. So execute and give the output. That's what is a performance, because then it will be measurable. Then you will be measuring. So for time management, keep 3 P's: plan, prioritize, perform. Right? 3 things you have. Then leadership skills. Let's see what is this leadership skill. You are running a company. You are saying, I am not going to become a leader. I am not going to become a politician. No. Your leadership capabilities here are different than the leadership capabilities of a politician. So make sure that you are a good leader also. I say it here, 2 things. You can see it here. All the persons, you can say this is a leader. This is you who is running a you can say a small business. Then you have to bring all the persons in the same direction so that your energy is channelized in only in one direction. आपकी energy एक ही direction में flow करे. And it is well said, a leader is one who knows the way, जिसको रास्ता भी पता है, जो goes the way, जो उस पे चलने के लिए तैयार भी है, और तीसरा shows the way, जो दूसरों को मार्गदर्शन कर सकता है. ये तीनों चीजें अगर जिसमें है, वो एक अच्छा लीडर है. और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए या अच्छे बिजनेस के लिए ये लीडरशिप क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है. सो if you have a leadership qualities, then leadership you will inspire. आप अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, राइट? एंड अगर आपको मेजर करना है कि whether your employees are inspiring or not, then if your actions inspire employees to dream more, अगर आपके एक्शन से एम्प्लॉइज ज्यादा सोच सपना देखना शुरू कर देता है,
ज्यादा सीखना शुरू कर देता है, लर्न मोर, ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, डू मोर। एंड जितना वो कैपेबल है अपने को पुश करके थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके ऊपर बढ़ जाता है, दैट मीन्स एंड बिकम मोर, देन यू थिंक यू आर ए गुड लीडर। अदरवाइज you require improvement in your leadership skill. But again, leadership is not a isolated, you can say, skill. For that, a general positive attitude and outlook, आपका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड और आउटलुक होना चाहिए, तभी आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। अगर आपका आउटलुक अच्छा नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, निगेटिव एटीट्यूड के साथ आज तक कोई नहीं आगे बढ़ा है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अगेन, कम्युनिकेशन जो मैंने पहले बताया है, यू हैव टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, तभी आपके एम्प्लॉइज इंस्पायर होंगे, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। एंड एन एप्टीट्यूड फॉर सेल्फ मोटिवेटिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स, आपको अपने को भी पुश करते रहना है, अपने को भी मोटिवेट करते रहना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है। देन व्हाट इज वन बैकबोन फॉर दिस लीडरशिप? That's what is the word discipline, जिसको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। I'm saying honestly, why we are forgetting it? Let's see that also. Maybe some of you may be from the village background, having a joint family, but when we talk about, हम जो शहर की बात करते हैं, when we talk about, we have a nucleus family, छोटी family। हमारा क्या है, केवल 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है। I'm telling, हमारे इंस्टीट्यूट्स में भी किसी के भी 1 या 2, 3 तो हमारे यहाँ किसी के है ही नहीं। 93 से मैं देख रहा हूँ, ना एक्सेप्ट सीनियर्स जो हमसे रिटायर हो गए। हमारी जनरेशन में किसी के 3 बच्चे नहीं है, 2 1 है। वाइफ एंड हस्बैंड आर बोथ सर्विंग कुछ केसेस में, और उनके 1 बच्चा है। नाउ एवरी डिमांड ऑफ द चाइल्ड इज फुलफिल्ड। उसने गलत चीज भी मांगी, हमने दे दी उसको। उसने कहा मुझे इतना चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए, चाहे वो बेकार आके लाके घर में फेंक दे, बिकॉज दे neither mother neither father both are not earning central government employees and they do not have lack of money. So what will happen? Will the child get a habit of discipline right from the birth? No. So some restraints are there. हम discipline word को धीरे धीरे, I am saying a bitter thing but this is a very much correct thing, लेकिन अभी भी काफी जगह, काफी फैमिलीज में है। ये डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आएगा, बट हमको डिसिप्लिन धीरे धीरे लाना पड़ेगा। बट वी कैन स्टार्ट एनी डे। अगर आपको आज लगता है मेरी सुबह उठने की हैबिट नहीं है, you can develop that, you can discipline yourself. We say you can discipline yourself and change your biological clock. Only thing is biological clock. If you are sleeping late or not getting early, if you are not doing exercises, that's something in your mind. You are not determined, you are not self motivated. So be determined, be self motivating, cultivate discipline, you will be and have a positive attitude, you will be a good leader. Then stress management. Now if I say you are starting a company and you say you will not have any stress, no, that's not possible. You will be subjected to lot of stress. Now you will say, sir, क्यों आप हमको डरा रहे हैं? No, I am not making you afraid, but that's a reality. That's why I have written, do you know the fact that you will be subjected to lot of stress before you even start any business? The idea itself is stressful enough. ये idea आते ही आपको stress आना शुरू हो जाएगा, but no, that's why this stress management is one of the interpersonal things. When you are starting a business or even in job, you have lot of stress. Your boss requires this. As an entrepreneur, you want to succeed, you want to achieve this target. It is stressful, and that's what stress management is very much required. And not only you, not as a owner of the company, your employees are also stressed because they will also be putting under certain you can say pressure that you have to deliver this.
And if you have to deliver this, then certainly they will feel stressed out. And if the stress keep on accumulating, ये frustration में turn हो जाता है. और अगर किसी कंपनी में और ये फिर फ्रस्ट्रेशन वर्किंग एनवायरनमेंट को खराब करता है, पॉल्यूट करता है. सो आपकी कंपनी धीरे धीरे अगर स्ट्रेस्ड एम्प्लॉइज रखेंगे आप उसमें, तो धीरे धीरे आपकी कंपनी को क्या होगा कि वहां पर लोग वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा, वहां आने में लोग पसंद नहीं करेंगे, अच्छी टैलेंट आपको नहीं मिल पाएगी. So do your stress management, do something for the stress management of your employees also. और आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी में वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत ही प्लेजिंग रहे, नॉट स्ट्रेसफुल. That's what you have to see it. Then what you can say? I will say only one thing. Stop stressing, start living. आजकल टेंडेंसी क्या हो गई है? Just one small example. ऑफिस में भी हम काम करेंगे, घर में भी जाके हम उसी को सोचेंगे, अगले दिन सुबह भी हम उसी को सोचेंगे. हमारा टाइम ही कहाँ मिला? हम तो हर समय ऑफिस का ही सोच रहे हैं, हम जॉब ही सोच रहे हैं, हम हमेशा अपनी कंपनी ही सोच रहे हैं. नो, यू हैव टू लिव योर लाइफ. आपको कुछ टाइम, आपको मैक्सिमम टाइम आपको ऑफिस के लिए देना है, कंपनी के लिए देना है, आपको फैमिली के लिए टाइम सेटल करना है, अपने रिक्रिएशन के लिए टाइम सेटल करना है. Then and only then you can manage the stress. I always advise my students also, and whenever I give some talks, that you have to develop some passion. अगर आपको अपना stress remove करना है, develop some hobby, develop some passion. Let's say you like me listening music. I'm not saying you dance it. If you like dancing, dance it. अगर आप 15 मिनट भी 5 मिनट भी डांस कर लेंगे ना, if you are a good if you are a dancer, आपका पूरा स्ट्रेस बॉडी रिलीज हो जाएगा. अगर आपको लगता है कि किसी को कुकिंग की वो है, जाइए घर में जाइए, अपना थोड़ी देर अपना, जैसे आई एम ऑल्सो ए गुड कुक, लेट्स सी. सो कभी कभी मुझे स्ट्रेस लगता है तो आई प्रिपेयर, एंड माय वन ऑफ द फेवरेट इज कुकिंग यू कैन से पनीर सब्जी, which we call cheese tomato. उसमें चीज बहुत ज्यादा आते हैं. That is specific thing I make for this. And stuffed paratha. These are the two things. My even child likes that stuffed paratha. कि पापा आप कब बना रहे हैं? So someday when I will feel stress or on Sunday relax में, oh आज चलो मैं आप लोगों के लिए पराठा बनाता हूँ. ठीक है? How good you will feel when your kids demands कि Papa I want this to be made by you, not by mommy, because you make better than this. So that's a hobby, that's a passion you develop it. बिना किसी कारण से आपको अगर जो भी है, जैसे I play badminton, आप जाइए हाफ एन आवर प्ले करके आइए एंड यू आर फीलिंग लेस स्ट्रेस्ड. सो आई विल से दैट you do yoga, pursue your hobby, and pursue your hobby first thing. Apart from that, yoga and meditation are the two things which you can think of yourself. और जब आप कंपनी रन कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस से रिमूव करने के लिए अपने लिए भी और अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए भी आप योगा और मेडिटेशन क्लासेस को शुरू कर सकते हैं, एंड यू विल सी इट विल डू वंडर. एंड अनदर थिंग इज, अनदर टेंडेंसी इज, ओ योगा क्लास मैं करा रहा हूं, मेरा ऑफिस टाइमिंग है 9 से लेके 5:30, मैं केवल 5:30 के बाद योगा कराऊंगा. क्या आधा घंटे भाई 5:30 से 6 आप करके चाहिए? नो एम्प्लॉइज विल बी, यू कैन से, इंटरेस्टेड. इवन इफ ही इज डूइंग, उसका माइंड होगा यार मुझे बहुत जल्दी से घर जाना है यार. So always if you are arranging some yoga or meditation classes in your, no matter it's a small or big one, you have to do it in office timing. आपको जापान में, do you know in Japan they have a compulsory system in lunch that they have to take a nap for, they say power nap for 16 minutes, they say.
Rather, we make it a 15 to 20 minutes. So all them, they have a very good, you can say beds and some sofas type put. Anyone as per his choice will relax for 15 minutes or 20 minutes, and then he will work. And their output in the afternoon increases. So sometimes you feel less in energy in the afternoon. Just take a 15 to 20 minute strong nap, power nap, which you call. एक झपकी ले लीजिए, जो हिंदी में कहते हैं हम, कुर्सी पे बैठे बैठे ही ले लीजिए. That will help. But then don't take more than 20 minutes. बॉडी क्लॉक आपकी क्या होगी, आलस की तरफ चली जाएगी और डीप, अभी 20 मिनट्स में आप डीप स्लीप में नहीं जाते. 20 मिनट से आप ज्यादा जाएंगे, यू विल गो इन डीप स्लीप and then laziness will come. So don't go more than 20 minutes, right? So that's how you can manage the stress. Then there are other things like self-motivation, integrity. You say self-motivation, integrity, strong work ethic. So you have asked the question, am I motivated and dedicated to get the job done? क्या आप किसी काम को करने के लिए बिल्कुल मोटिवेटेड और डेडिकेटेड फील करते हैं? No matter whatever is in normal circumstances, everyone will do it. I am not talking about normal circumstances. When the going get tough, जब कंडीशंस अच्छी नहीं है, जब आपकी आउटपुट देखना अच्छी नहीं आ रही है, इन दो सर्कमटेंसेस, हाउ मच एडवर्स दीज आर, क्या आप मोटिवेटेड, अपने को मोटिवेटेड रख कर काम कर सकते हैं, आप डेडिकेटेड फील कर सकते हैं? इफ यू, देन यू आर सेल्फ मोटिवेटेड. इफ नॉट, देन डेवलप दिस. And second thing is whether I am working hard and always doing my best. That's another important thing, whether I am working hard and always doing my best. आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, आपको जो खुशी मिलती है, आपको जो प्लेजर मिलता है, आपको हैप्पीनेस मिलती है, वो रिजल्ट से नहीं मिलती कभी भी. आप उसको आप ध्यान से देखिएगा, आप कुछ पिछले अभी एनालाइज करिएगा, आपने कितना एफर्ट्स किया है उसमें, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस एम को अचीव करने के लिए. अगर आपने बेस्ट एफर्ट्स किया है, उसके बाद आप फेल भी हो गए, आपके चेहरे पे बहुत ही खुशी होगी कि आई डिड माई बेस्ट. ओके, लेट्स सी, लेट मी एनालाइज मेरे से कहां पे गलती हुई. अगर मैंने पूरा अपना एफर्ट्स नहीं पुट किया है तो क्या होगा, आई विल नॉट बी एबल टू, इवन एट आई गॉट द सक्सेस, मैंने सक्सेस पा ली, लेकिन मैंने पूरा एफर्ट्स नहीं किया, मैं उस सक्सेस को उतना अच्छी तरह से एंजॉय नहीं करूंगा. आई विल नॉट फील दैट मच हैप्पी. इट्स योर एफर्ट्स व्हिच मैटर्स, and efforts, hard work, that matters. So put your best efforts. If you are asking these two questions, you can become self-motivated. It is a personal drive to achieve, is directly linked to our mindset. हमारा mindset से पूरा governed हो रहा है. Motivation, hard work, dedication, ये mind से governed हो रहा है हमारे यहाँ से. And mind, अगर हम कह रहे हैं mind का मतलब, अगर आपको mind से efficiency चाहिए, then you have to have a high energy level. आपके अंदर जो energy level है, content है, वो high होना पड़ेगा. And when it is there, वो कहाँ से आएगा energy level? It comes from your commitment to resilience and your diet. Now you say, sir, diet कहाँ से आ गई इसमें? अभी तो आप हमें से soft skills बता रहे हैं, अभी आपने diet में बात कर दी. Balanced diet is one of the things to put your energy level high, which will put your mindset in a positive direction, which will make you dedicated and motivated and put your best efforts. ये सब interlinked है. And why it is coming, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके अगली स्लाइड पे चलूंगा. आप एक दिन पिज्जा खाइए और एक दिन आप कोई भी यू कैन से डिफरेंट दाल या ले लीजिए, या आप डिफरेंट वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स लिए, उसको जस्ट बॉईल करिए, उसको खाइए. आप जब वो
बॉइल्ड और ये वेजिटेबल्स और ग्रीन जिसमें एनर्जी लेवल आपका फाइबर सब चीजें हैं, जब वो आप खाएंगे यू विल सी दैट योर एफिशिएंसी एंड योर माइंड विल से ओ थोड़ा और काम करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत लाइट फील कर रहा हूं मैं, आई विल वर्क। बट अगर आपने पिज्जा खा लिया, आपने छोला भटूरा खा लिया, जैसे कि हॉस्टल में कभी कभी मिलता भी है, हम लोग भी खाते थे, ऐसा नहीं है, उसको भी खाना चाहिए सैटरडे के दिन, जिस दिन आप रिलैक्स फील करें, then you think you feel lethargic because the energy is not positive energy, it will not give it because you have not taken a balanced diet. So make sure that you are able to take a balanced diet also for being a successful entrepreneur. इसलिए भी जरूरी है, खाना पीना भी ठीक रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एनर्जी और रेसिलियंस को मैंने और वो किया है कि बैलेंस डाइट के साथ साथ ये रिपीट हो गया है, रेसिलियंस इज बॉर्न आउट ऑफ करेज टू ओवरकम चैलेंजेस। अब रेसिलियंस कहां से आएगा आपके अंदर? आपके अंदर करेज होना चाहिए कि मैं चैलेंजेस को ओवरकम करूंगा, तब आपके अंदर रेसिलियंस आएगा। कमिटमेंट तो आपने हर किसी ने शाहरुख सॉरी किसकी वो सलमान खान की पिक्चर देखी होगी, वो जब मैंने अपने से कमिट कर लिया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, ठीक है। तो भाई वो कमिटमेंट तो वैसा ही कमिटमेंट चाहिए, लेकिन आपको लड़ने के लिए नहीं चाहिए, आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चाहिए। यस, आप सपने कहते हैं, व्हाट आर ड्रीम्स? Dreams are not which make you sleep. Dreams are those which are really making you awake even in the night. Okay, I have to do this much work. So be committed, set your goals, and this is another two things. इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी आज की दुनिया में ये बहुत कम होती जा रही है, हर कोई अपना छोटा फायदा लेकर निकलना चाह रहा है। दे हैड बिकम ए रेयर ट्रेट। People are liked who are having integrity and honesty. Be honest, be integrity, have integrity. Then strong personal professional work ethic should be the norm. Shortcut नहीं चलेगा कि हमने आज सक्सेस चाहिए, हमने शॉर्टकट लिया। एथिक्स फॉलो करिए, नॉर्म्स फॉलो करिए, प्रिंसिपल्स फॉर्म करिए, स्टैंडर्ड्स फॉलो करिए और आगे बढ़िए। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यू हैव टू बी क्रिएटिव। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो नया आइडिया ही नहीं आएगा, और अगर नया आइडिया नहीं आप में आएगा तो आप कैसे कंपनी चलाएंगे, आप कैसे स्टार्टअप चलाएंगे? स्टार्टअप क्या है आप सोच के देखिए। वो चीज जो हम सारे लोग देख रहे हैं, किसी के माइंड में अब आया कि भाई ओके I will simply, you can say, do this all things which are there, and they have made a startup. I was seeing someone that for even for this in Delhi, one startup has come, which is just come, which is for your last rituals. They say ring it, we will give you a package. आपको किस तरह का चाहिए, आपको किस तरह का अर्थी चाहिए, क्या चाहिए, and they have made a startup. And people are liking that because no one has a time to arrange for all things. They will just give a phone and they will arrange it, take the money. What is this? We all are seeing all the things. I'm giving the extreme example. Even for the last rituals, they have made a startup which may not be ethically correct or something like this. We may discuss, not a point of discussions. And I am not saying that it's quite ethical. I'm putting a question mark also. But what I am saying is, even see the creativity of that person. I am only checking the creativity who has उसने last में एक आखिरी संस्कार को भी उसने उसमें कन्वर्ट कर दिया आइडिया में। So that's what is creativity. And creativity can only come through problem solving. आप में problem solving की हिम्मत होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप क्रिएटिव हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। Then teamwork, that's really important. You have to ask the question, how well I can work in a group or in a team.
if you want to work in a group or team, be unbiased. एक simple word, be unbiased. अगर आपके strong preferences हैं, non preferences हैं कि नहीं यार ये person तो अच्छा काम नहीं करेगा, आप team work नहीं करा सकते. So do not be biased, do not have preferences or non preferences, just judge it based on his skills and give him an appropriate job. And if you are dividing that job between different persons, then that's what they are moving in one direction. That's teamwork. And they will be, you may ask, they may go forward, they may go left, they may go right, they will achieve your aims. And entrepreneurship or startup is all about teamwork. You require 4 or 5 persons. Even could you believe it? I'm just within a few slides are only there, so I will finish it very shortly. So I will just give an example. One of my MTech students who is working with me, he was not giving me output. He is very intelligent, he is very sharp, but he was not giving me output. Then now July में ही मेरे साथ register हुआ. Then I asked him, यार मैं उसको धीरे धीरे पूछता रहा, उसने कुछ नहीं बताया मेरे. But I keep on increasing, I keep on telling, and I keep on giving all the facilities. जब भी वो आता मैं discuss करता सब चीजें. One fine morning, he developed that faith and confidence. Then he told me, sir, he is running a startup, and that's why he's most of the time is there in the startup also, and he is doing the MTech also. Then I asked, why you come for that? कहता सर हमारे स्टार्टअप जो सिविल इंजीनियरिंग में हम कंस्ट्रक्शन और डिजाइन में ले रहे हैं, नाउ वी वांट टू डाइवर्सिफाई इन द फील्ड ऑफ जियोइंफॉर्मेटिक्स. दैट्स व्हाई वन ऑफ द 5 लोगों ने बीटेक से स्टार्टअप शुरू किया, बीटेक फाइनल ईयर से, एंड उन्होंने आज वो आ रहा है डाइवर्सिफिकेशन पे भी आ गए वो, एंड दे आर नाउ सेइंग सर हम एआई अप्लाई करेंगे. इसलिए वो मेरे साथ मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज को यूज करके वो जियोइंफॉर्मेटिक्स में काम कर रहा है. So he's saying, sir, इसका बहुत वो है इसको. So I will go ahead. Then I understand. अगर मैं प्रेजुडिस हो जाता, उसके साथ डिस्कशंस ना करता, उसको इनकरेज ना करता, उसको फैसिलिटेट ना करता, शायद तो मुझे पता ही नहीं लगता, और मैं सोचता यार कितना स्टूडेंट्स खराब है. That's why मैंने कहा था be a good listener, don't be prejudiced, and then people will cooperate with you, people will come out and give your heart out. और जब आप उसको पूरा सुनेंगे, and now I'm telling him, giving him some ideas also, and he's feeling happy. So that's what is teamwork. That's what even in a teacher and a student working for PhD or MTech, वो भी एक टीम की तरह से ही काम कर रहे हैं, and we have to understand each other. I hope I will check it out. How many slides are there? Oh, just 3-4, sir. Emotional intelligence. Thank you, Vikas ji. Just 3-4 slides हैं, right? Emotional intelligence, EQ we say. That's very important. हमारा क्या होता है, आपको मैं चूंकि मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूं इसको. आप किसी एडवर्स सिचुएशन में फंस गए, आपके बॉस ने आपको डांट दिया, या आपने आप किसी उसके लिए गए लैंडिंग के लिए कि आपका बैंक लोन रिजेक्ट हो गया, या आप किसी को प्रेजेंट किया and you are expecting some funding, you did not get it. Then what will happen? आप रूम पे आए, वहां तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेंडर को तो कुछ नहीं कह सकते, आप ना बैंक को कुछ कह सकते हैं. आप क्या है, घर रूम पे आए, अपने ऑफिस में आए, ऑफिस में आपको जो जरा सी छोटी सी गलती किसी उसकी मिली आपको एम्प्लॉय की, आपने उसको डांट दिया. अब क्या, एक खराब चीज तो आपके साथ वहां हुई और एक डांटने पे खराब चीज हो गई. Because why you did that? Because you are not able to control your emotions. And that's what we call emotional stability. And that's what we say emotional intelligence, or emotional intelligence we generally say EQ, not EI. In fact, it is emotional quotient, they call it. So you should have the capability to aware of the emotions, to control your emotions, and to express your emotions. अगर आप ये कर सकते हैं, then you have a high EQ. And companies आजकल high EQ के
persons को सर्च कर रही हैं. Lot of market is there, lot of companies are looking for a emotionally stable person or having a high EQ, emotional intelligence. Because if you have a high EQ, you are able to handle high pressure situations, which will certainly come in your job. You can resolve the conflict. You can give constructive criticism. So always try to develop this. आप इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए. और इमोशन को फिर कंट्रोल कहां से करेंगे? मैं बैक में जाऊंगा, फिर वही चीज. Two things will be very much helpful: vipassana or meditation, and second thing is your yoga. एक इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, जिससे कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ पाएंगे कि क्या चीज है, क्योंकि दैट विल बी द वन ऑफ द गुड एग्जांपल. आपका तूफान आ रहा है, मान लीजिए you are in there. There are two options with you. You are trying to control the, you can say, जो external disturbance है in the form of dust storm or something like that. Second thing is, you try to see what are the feelings, what are the emotions, or what are the things which are changing my internal body, you can say, structure. आपको लग रहा है, मुझे अंदर लग रहा है, मैं थोड़ा सा डर लग रहा है. Then if you are in a good state of meditation, you will be seeing that, you will be able to pinpoint that that's what the external stimulus, we call it external stimulus, ने हमको इतना disturb किया. And I will not, you can say, look for the external stimulus. मैं उसको control नहीं करूंगा. I will control myself. To control the emotions, that's the best way to do it. And that's meditation. विपासना क्या सिखाता है आपको? आप जब ब्रीथ लेते हैं, कहां से ब्रीथिंग पैटर्न जा रहा है, क्या माइन्यूट चेंजेस आपके उसमें हो रहे हैं. अगर आप थोड़ा सा तेजी से सांस ले रहे हैं, हल्का ले रहे हैं, दैट्स लेटर स्टेज ऑफ विपासना और मेडिटेशन. सो कंट्रोल योर इमोशंस अकॉर्डिंगली. दैट्स व्हाट वी रिक्वायर. Positive attitude and self-confidence. If you say that you are having a yes, be always optimistic, upbeat, and have a positive attitude, this will always give you a higher journey like this. Believe in yourself. आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ. बिल्कुल बिलीव करते रहिए. डेडिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑल जो कैपेबिलिटीज बताई हैं मैंने सॉफ्ट स्किल्स के साथ आगे बढ़ते रहिए. You will be successful. You will be highly successful, right? So believe in yourself, trust in your abilities, judgment, network, and have courage to ask questions and contribute ideas. If you are having this, you can be very much successful. But at the same time, be flexible and be adaptable. What is flexibility? You should be able to get some ideas from others also. So be open to new ideas. ये flexibility है. मैं new ideas के लिए, मैं एक idea के साथ चला, मैंने देखा कि नहीं यार, ये idea और मैं implement कर लूंगा, then this will be better. So implement that idea. No one will stop you. Embrace the change. जो change हो रहा है उसको embrace करिए, उसको accept करिए. Adapt to new situations. Like I just give the example, there is a dust storm or storm. You cannot control that. You can control yourself and adapt to new situation. Whatever damage it has done, it has to be done. You adapt to new situations and keep on working for betterment. Consider various alternatives. Plan A लागू नहीं हो रहा है तो implement plan B. And always ever willing to learn new things. So don't worry about that. Even at the age of 57 years, I am 57 years old. I am with my students, I am, you can say, going through, or I am attending one course on machine learning and Python, you can say, programming. That's my hard skills I am improving. At the same time, I am working on soft skills. So you have to make a judicious balance between these two. Hard work and work smart. Work hard and work smart. दोनों चीजें. आजकल स्मार्ट वर्क भी चाहिए आपको. You should be smart enough. केवल हार्ड वर्क से आपको सफलता नहीं मिलेगी.
then you will achieve. I will only say, as Professor Vikas ji also told, I did my BTech, I'm taking PhD from IIT, so I know one of the you can say motto of IIT Roorkee, जो हमको इतने सिखाया जाता है, श्रमं विना न किमपि साध्यते. Nothing can be achieved without hard work. That is, you can only achieve success by hard work only. That's the motto which I always keep in my mind and keep on working hard. So achieve goals using soft skills. And with this, I wish you all a very good luck to in your future endeavors, and I am open to your questions, please. And not even today, if you can note down my email ID, or it is already recorded, I hope so, because my dekh raha tha recording was on. So you can see this email ID, and in case of any queries, any time later on, you can just send me an email, give this reference, and always we can be in touch with all of you. So that's all from my side. Thank you very much. Open to question answer sessions, please. I hand over to Professor Vikas ji. Sir, any question from the audience side? If any question they want to send in the email, it may be also preferred by them. Pathak sir, may I give the thank you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you is not a prayer that can be seen or touched. It must be felt by heart, sir. सॉफ्ट स्किल आर वेरी एसेंशियल फैक्टर इन सेटिंग अप एंटरप्रेन्योरशिप. ये तो बात सही है सर कि सॉफ्ट स्किल इज बेसिकली वेरी वेरी एसेंशियल फैक्टर फॉर सेटिंग अप एंटरप्रेन्योरशिप. Soft skill will always be needed throughout the life cycle of the entrepreneurship. So that the lecture of Professor Dr. R.D. Gupta sir is very important. The government of India has made a ministry for skill and entrepreneurship development. And today we have understood, including me also, the classification of skill very closely explained by Dr. R.D. Gupta sir. In the context of self-motivation, Swami Vivekananda said that the greatest religion is to be true to your own nature. Have faith in yourself. How stress management can be done through soft skill. Dr. R.D. Gupta sir have also explained in a very practical way. Today, my word is not enough to express my gratitude to Dr. R.D. Gupta sir, who graced us with his soft skill words. We will ever remain grateful to you, sir, and we thank you for being with us today. Sir, today you have explained soft skill very, very well, and soft skills are backbone of the entrepreneurship, and it is the essential part of this certification program. You also explain emotional intelligence EQ is one of the most important soft skill an entrepreneur need to develop. And today you have explained emotional intelligence EQ very well. The ability to manage emotions and the people around the youth, they are here, is a powerful tool that can be affect success of a startup. I would like to thank all Dean Head Department who blessed us and youths with their presence in different platforms and classroom and seminar hall also. I'm also very much thankful to the all participants. On the behalf of Indira Gandhi National Tribal University, Vice Chancellor, Registrar, Dean of Faculty, Head of Department, students, youth, convey deep regards and hearty thanks to our keynote speaker, Dr. R.D. Gupta sir. I feel proud and thank you for making this event successful one. Sir, we also cordially invite you to the land of Ma Narmada Amarkantak. Please come, sir. By today, you online, but we feel you come offline also, sir. We will invite you. And thanks, my bottom heart, sir. You accept our invitation, give wonderful lecture in the field of soft skills. This is the backbone of the entrepreneurship development. Really very nice. We will upload your lecture in the YouTube channel, our YouTube channel. एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका सादर हृदय के अतल गहराइयों से आपका स्वागत, और साथ में आपको धन्यवाद
धन्यवाद बोल के इसको नहीं करूंगा, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हम लोग बराबर लेते रहेंगे। और एक ये ऑल ओवर नेशन का, इवन जो एनआरआईज हैं उनका भी एक ग्रुप हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा है कि आत्मनिर्भर स्वावलंबन को लेकर एक ऐसा टीम तैयार हो, क्योंकि भारत का 130 करोड़ के पॉपुलेशन में 1, 2, 10, 100 बल्कि ये 1000 की एक टीम तैयार हो जो इनको पूरी मोटिवेट करे देश भर को सर। उसमें सर आप भी हैं और हम लोग को ऐसा मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप सतत हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर अभिवादन। Thank you very much, Professor Vikas ji. And for anything, we will be in touch with you. And certainly, it will be my pleasure to come over there. And we will be in touch and we'll cooperate with each other. Thank you very much. थैंक यू। आप हमारे संगम पे हैं, नर्मदा, गंगा जी और यमुना जी के, और हम लोग नर्मदा जी के तट पर हैं। तो पवित्र गंगा तट मैया पर भी है दर्शन सर। करने आती है, नर्मदा मैया की। तो बहुत अच्छा जी है कि आप भी आए और हम लोग भी वहाँ आए सर जी। श्योर श्योर सर। नमस्कार सर।